हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेरिश टू लर्न। तो आज आम डिस्कस करवा डेली करेन्ट अफेयर एनालिसिस नवेम्बर 1 डेली करेन्ट अफेयर आज डिस्कस करवा। सो जो मैंने करेन्ट अफेयर पीडीएफ चाहते से चेरिश टू लर्न चैनल टेलीग्राम चैनल जॉइन करूँ। लिंक को क्लिक करके ना क्यूआर कोड स्कैन कर जॉइन करेंगे पीडीएफ पे। सो आज क्लास आम स्टार्ट करवा। तो फास्ट देखा आर्टिकल अच्छी ए क्लाइमेट टाइम मशीन टू प्रेडिक्ट अमेजन्स फ्यूचर। तो अमेजन फ्यूचर गोटे अमेजन फेस प्रोजेक्ट गोटे लॉन्च कराई तादरे देखा क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट केमिति कोन रहउची अमेजन फॉरेस्ट ऊपर सेटा देखा तो प्रोजेक्टटा लॉन्च कराई कोठी ना मार्नुस जोटा कि ब्राजिल रे अछि नियर मार्नुस ब्राजिल एवं से प्रोजेक्ट लॉन्च कराई सेटा होची कोन ना अमेजन फेस प्रोजेक्ट। तो एक्सपेरिमेंट टू स्टिमुलेट फ्यूचर क्लाइमेट एंड कंडीशन इन अमेजन रेन फॉरेस्ट रे प्रेडिक्ट करा जो फ्यूचर क्लाइमेट कंडीशन केमिति कोन रहिबो। तो एथिरे कोन करा को मेथड यूज करा ना फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट जोटा कि फेस को फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट मेथड यूज करा जिवो। रिसर्चर्स पंप कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फॉरेस्ट कैनोपी टू मिमिक एटमॉस्फेरिक लेवल एक्सपेक्ट इन कमिंग डिकेड। तो फ्यूचर रे कोन होबो, तो अपकमिंग डिकेड रे कोन होबो सेटा को रिसर्च करा जिवो जोटा को टेक्निक यूज करा होची ना पंप कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फॉरेस्ट कैनोपी जोटा कि यूजिंग फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट मेथड यूज करा जिवो। तो ऑब्जेक्टिव हैला कोन ना हाउ इंक्रीज CO2 अफेक्ट फॉरेस्ट ग्रोथ कार्बन एब्जॉर्प्शन एंड इकोसिस्टम रेजिलियंस को केमिति कोन अफेक्ट करूची सेटा देखा जिवो। तार ऑब्जेक्टिव होची सेटा। तो प्रेडिक्ट द अमेजन रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज को नहीं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट रेस्पॉन्स कोन रहउची सेटा देखा जिवो एवं इन्फॉर्म ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल। तो कोलाबोरेटर किए रोचंती ना INPA जोटा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेजोनियन रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग जोटा यूके रोची दी जनकर जॉइंट कोलाबोरेशन रोची INPA एंड यूके। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट देखिए कोन ना लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड होची अमेजन रेन फॉरेस्ट। ताको कोन कहंती सेल्वास कहंती सेल्वास। अमेजन को कहंती ना सेल्वास कहंती अमेजन को। देन नेक्स्ट आर्टिकल देखिबा इंडिया एंड यूएस इंक 10 ईयर डिफेंस एग्रीमेंट। तो इंडिया यूएस भितर 10 ईयर पई डिफेंस एग्रीमेंट साइन कराइची। तो ऑलरेडी एटा को लगेले 3 थर ऑलरेडी ए एग्रीमेंट टा अपग्रेड करा सैलानी। फर्स्ट टाइम हेतला 2005 रे हेतला, देन 2015, नेक्स्ट हैला 2025। तो अपग्रेड करा करी हे चालुची। तो 3 थर अपग्रेड हे सारले। तो जोटा कि कोड हेची ना कुआलालंपुर रे हेची मालेशिया रे हेची मालेशिया रो कुआलालंपुर रे हेची एग्रीमेंट टा साइन करा हेची बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ वार जोटा कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जोटा सेटा चेंज हेची सेक्रेटरी ऑफ वार पीट हेक्सेट को मध्य रे एग्रीमेंट साइन करा हेची। तो ऑब्जेक्टिव कोन रहला ना डिफेंस टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग करा जिवो। ता सहित इंटर ऑपरेबिलिटी रहइबो बिटवीन आर्म फोर्सेस एंड जॉइंट डेवलपमेंट जोटा कि एपर्यंत हे पारि नाही। जॉइंट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एपर्यंत हे नाही इंडिया यूएस भितर। किंतु जब देखिबा इंडिया फ्रांस भितर हेची इंडिया इजराइल सहित होची जॉइंट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन हेलानी बट यूएसए सहित हे नै। इंडिया रो अलगा कंट्री मानो सहित मध्य डिफेंस पैक्ट रहिची जेमिति कि इजराइल सहित रहिची। तो इजराइल सहित अछि, फ्रांस सहित अछि, रूस सहित अछि। रूस सहित हमें ऑलरेडी ब्रह्मोस करूचंती। एबे कोन कालाशिनोव राइफल सेटा मध्य बनाउची जॉइंट डेवलपमेंट होची इंडिया और रशिया मध्य रे। तो यूएसए सहित एपर्यंत जॉइंट डेवलपमेंट और प्रोडक्शन हे पारि नाही। तो एटा 2015 एग्रीमेंट रो अपग्रेड करा हला ताकू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रहइबो एंड बायलैटरल स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट रहइबो दुटा कंट्री भितर। देन देखिबा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। तो भगवान बिरसा मुंडा कोन करा होची ना जनजातीय गौरव दिवस तांको जन्मदिन को कोन करा होची ना जनजातीय गौरव दिवस रूपे सेलिब्रेट करा जाउची जेटा कि तांकर 150th एनिवर्सरी 150th बर्थ एनिवर्सरी रे करा जिवो बिरसा मुंडा @150। तो इंडिया विल प्रॉस्पर व्हेन आवर ट्राइबल कम्युनिटी प्रॉस्पर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी इज आवर फॉरमोस्ट प्रायोरिटी एटा प्राइम मिनिस्टर कहचंती।
तो 150 बार्थ एनिवर्सरी नहीं कि कौन है ना 1 नवेम्बर रु 15 नवेम्बर पर्यंत जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा सेलिब्रेट करा नेशन वाइड करा तो 1 लाख इवेंट करा बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन 30 स्टेट ट्राइबल हेरिटेज कल्चर ऊपर डिस्कशन में करा मेजर पब्लिक फोकस्ड इनिशिएटिव मध्ये रहइबो ट्राइबल विलेज विजन 2030 जोटा कि आदि सेवा केंद्र प्रॉपर अंडर आदि कर्मयोगी अभियान रहइबो एवं शोकेस बंधन प्रोडक्ट जो माने रहले ट्राइबल कम्युनिटी रहले एवं पीवीटीसी कम्युनिटी रहले सेमानकर प्रोडक्ट गुडा को शोकेस करा जिवो आ बेनिफिट सैचुरेशन कैंप फॉर पीवीटीसी हाउस होल्ड जो माने रहले हेल्थ मेडिकल कैंप मध्ये ऑर्गेनाइज करा जिवो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया रे सहित एजुकेशनल पार्टिसिपेशन रहिबो कोन एकलव्य मॉडल स्कूल जोडा रहउची ट्राइबल कम्युनिटी मानक पे अक्रॉस कंट्री विल होस्ट 7000 एक्टिविटी होस्ट करा जिवो कोठी एकलव्य मॉडल स्कूल रे सेबा नेशनल यूनिटी डे रे रन हेची कोठी रन फॉर यूनिटी हेची कलिंग स्टेडियम रे हेची कलिंग स्टेडियम नेशनल यूनिटी डे हेची कोन सरदार पटेल को बर्थ एनिवर्सरी करा जाउची कोन नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट करा जाउची एतबे रन फॉर यूनिटी मार्च हेची कोठी कलिंग स्टेडियम रे देन नेक्स्ट आर्टिकल देखबे हम तो स्टेट टू इरिगेट 15 लाख हेक्टर इन 5 इयर्स तो ओडिसा कोन करबो ना तारो इरिगेशन नेटवर्क को स्प्रेड करिवो पाखापाखि इरिगेट करिवो केते 15 लाख हेक्टर लैंड को इरिगेट करा जिवो जोटा कि 2029-30 सुधा टार्गेट रही 15 लाख हेक्टर जमी को इरिगेट करा जिवो बाय 2029 एंड 30 तो चीफ मिनिस्टर विजिट करते स्टेट हाइड्रोलॉजिकल डाटा सेंटर जोटा रिव्यू करछन वाटर लेवल एंड सेंटर्स रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम करा जोटा कि मोर एफिशिएंट एंड स्मार्ट वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट तो इंपोर्टेंट है कोन ना 15 लाख हेक्टर बाय 2029-30 पर्यंत टार्गेट कराई 15 लाख हेक्टर जमी को जलसेचन जलसेचित करा नेक्स्ट देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट जोटा कि ऑर्गेनाइज कोड हेची ना भुवनेश्वर ऑर्गेनाइज हेची बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल चीफ गेस्ट के थिले ना मनोज आहूजा चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा The aim of the event was emphasizing innovation and leveraging Odisha's rich weaving tradition to boost textile sector and local economy roji aim roji focus area rahila innovation and technology enhancing market connectivity and artisan brands theme of the event was market connect expanding reach and build brand तो inaugural session रो theme कौन था market connect expanding reach and building brands interstate participation करेला representative from Assam, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan many state participated in the event तो inaugural session कोड हैला भुवनेश्वर and theme was market connect expanding reach and building brands तो interstate participation मध्ये रहउची आसाम, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान नेक्स्ट आर्टिकल देखिबा ओडिशा पुश फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन ग्रोथ तो क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन ग्रोथ को पुश करिछु ओडिशा गवर्नमेंट एम रोची तो ए इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड with title mainstreaming low carbon building material and transform the built environment in Odisha तो जोटा कि ऑर्गेनाइज हेची भुवनेश्वर बाय आईआईटी मद्रास ओडिशा हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड आईआईटी भुवनेश्वर तीन जन ऑर्गेनाइज करछन कोन आईआईटी भुवनेश्वर आईआईटी मद्रास एंड ओडिशा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की फोकस कोन रहला प्रमोटिंग लो कार्बन कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट रहला एवं calcined clay cement LC3 encourage sustainable urbanization retrofitting entrepreneurship and capacity building तो बेसिकली फोकस करछि कोन ना ट्रांसफॉर्म बिल्ट एनवायरनमेंट इन ओडिशा जोटा कि कोन होछि मेनस्ट्रीमिंग लो कार्बन बिल्डिंग मटेरियल टू ट्रांसफॉर्म बिल्ट एनवायरनमेंट इन ओडिशा जोटा कि लो कार्बन कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक रहला कोन कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट को रीयूज करा जिवो एवं कैल्साइंड क्ले सीमेंट जोडा रहला सेगुडा मध्ये प्रमोट करा जाय बिकॉज़ दे आर लो कार्बन कंस्ट्रक्शन मटेरियल एवं एनकरेजिंग सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रेट्रोफिटिंग देन नेक्स्ट आर्टिकल देखिबा क्रिएटिव हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन बाय अपोलो कैंसर सेंटर
Apple Cancer Center check wallet to remind regular breast self examination to aware about breast cancer. Initiative launch की करची ना Apple Cancer Center SCC launched check wallet on October 31 a dark chocolate based campaign to promote breast self examination. जो थे ଗୋଟେ QR code ରହିବ linking to breast self examination tutorial. The aim of the event was self care engaging and routine through familiar medium. जोटा कि launch की करची Apple Cancer Center to aware about breast cancer through breast self examination among women. Next article was National Marine Fishery Sensor 2025 launch. India launched National Marine Fishery Sensor 2025 in Kochi. Launched in Kochi. Major step toward digital and data-driven fishery governance. The census will provide comprehensive information on fishermen, fishing craft, and gear. So it will provide information regarding fishermen, fishing craft, and gear, supporting sustainable fishery management and policy making. So inaugurated by Union Minister Purushottam Rupala and to be conducted by Central Marine Fishery Research Institute CMFRI and Fishery Survey of India. Conduct करिवे दी जण एवं कवरेज रोची 3300 marine fishing village ता सहित 9.46 lakh marine fishermen family कवर कराजिवो. नेक्स्ट देखिबा तो डिजिटल अप्रोच रोची एथरे कोन ना मोबाइल ऐप यूज कराजिवो डिजिटल टूल for real time data collection. The trend enumerator will ensure accuracy and efficiency. एटा बेनिफिट कोन रहबो यार ओड पॉलिसी फॉर्मुलेशन बेले हेल्पफुल हबो वेलफेयर स्कीम लॉन्च करा जिवो एवं सस्टेनेबल फिशरी एटा ଗୋଟେ डाटा ड्रिवन अप्रोच रोची डाटा मिले से हिसाब रे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करा जिवो. तो सिग्निफिकेंस कोन रहला ना इंडिया रो ब्लू इकोनॉमी विजन रहिछि ता सहित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहिछि एवं एनहांस मैरीटाइम रिसोर्स गवर्नेंस. नेक्स्ट देखिबा वर्ल्ड कप ट्रॉफी नेम्ड आफ्टर आनंद विश्वनाथ आनंद को नेम रे तो चेस ट्रॉफी रो नेम करा जायछि विश्वनाथ आनंद कप. विश्वनाथ आनंद कप लॉन्च करा जायछि इन ऑनर ऑफ विश्वनाथ आनंद फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया. फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया विश्वनाथ आनंद. तो से दी थरो चैंपियन होइतले 2000 and 2002 फर्स्ट डीटा इनागुरल इवेंट रे से चैंपियन थिले वर्ल्ड चेस चैंपियन थिले विश्वनाथ आनंद. तांको ऑनर रे नेम करा जायछि विश्वनाथ आनंद कप इन ऑनर ऑफ 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन. 5 थरो वर्ल्ड चैंपियन हे जंती एवं फर्स्ट डीटा इनागुरल एडिशन रे मध्ये से चैंपियन थिले. तो देखिया म्यूनिक ओलंपियन जे थिले कोन हॉकी ओलंपिक रे कोन इंडिया ब्रोंज मेडल पाइतला म्यूनिक रे ब्रोंज पाइतला. तार ओलंपियन के थिले मैनुअल फ्रेडरिक रिसेंटली डाइड फ्रॉम केरला. तो ब्रोंज मेडलिस्ट थिला 1972 म्यूनिक ओलंपिक जो जर्मनी रे हितला सेथरे इंडिया कोन थिला ब्रोंज मेडल मिलथिला. नेक्स्ट देखिबा रशिया यूजेस मिसाइल इन यूक्रेन दैट लेड टू ट्रम्प क्वाइट न्यूक्लियर ट्रीटी. तो रशिया और यूएस भितरे गोटे न्यूक्लियर एग्रीमेंट गोटे थिला रशिया यूएस भितरे जोटा कि सेमाने कोन ना न्यूक्लियर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डब्ल्यूएमडी को डाटा शेयर करा जाउतला. तो रशिया यूएसए कहला रशिया वायोलेट कला परे रशिया वायोलेट जेतले कला यूएस कोन हला पुल आउट फ्रॉम द ट्रीटी इन ट्रम्प फास्टर. तो रिसेंटली यूक्रेन रो प्रेसिडेंट से कथा कहिसंती जे रशिया जो मिसाइल लॉन्च करथिला 9M729 जो मिसाइल लॉन्च कला जोटा कि वायलेट कोन करछि ना आईएनएफ इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी जोटा कि आईएनएफ ट्रीटी दाकु आउछि आईएनएफ ट्रीटी राइट 2019 रे यूएसए पुल आउट करथिला इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी जोटा 2019 रे वाशिंगटन सेड मिसाइल वाज ब्रेच ऑफ द ट्रीटी कुड फ्लाई बियॉन्ड लिमिट. तो ए ट्रीटी रो लिमिट थिला कोन ना 500 किलोमीटर लिमिट थिला. तो किंतु ए जो मिसाइल रेंज रहउची मिसाइल रेंज थिला केते ना
2500 किलोमीटर थिला मिसाइल रेंज जोटा कि रहला कोन ना ए मिसाइल 9M 729 मिसाइल रेंज थिला 25 किलोमीटर तो सेथै यूएस कहला कोन रशिया वायलेट करछि ट्रीटी सेति में यूएसए पुल आउट कला एग्रीमेंट रो देन नेक्स्ट देखिबा इंडिया फिल्म फेस्ट किक ऑफ इन हाइफा तो हाइफा होछि कोठी हाइफा होछि इजराइल रो पोर्ट जोटा कि अंडर आदानी पोर्ट तो सेठी कोन होछि ना सेकंड इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होछि तो इंपोर्टेंट है सेकंड इंडियन फिल्म फेस्ट कोडी होछि हाइफा जोटा कि इजराइल रो पोर्ट सिटी छी नेक्स्ट देखिबा तो प्रूफ एजेंसी कैन नॉट समन लॉयर तो सुप्रीम कोर्ट एबे रिसेंटली तांको रूलिंग देइचंती तो प्रूफ एजेंसी जो माने रहले से माने लॉयर मानन को डायरेक्ट समन करि परिबे नाही ओनली एसपी लेवल ऑफिसर समन करि परिबे तांकर प्रायर अप्रूवल दरकार तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया रूल दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैन नॉट समन लॉयर इन क्रिमिनल प्रूफ ले लॉयर मानन को समन करा जाय परिबो नै unless there is a prior approval of SP, Superintendent of Police. The judgment reinforces legal professional privilege and seek to prevent harassment of advocate. Advocate मान जो harassment करा जाउची सेति में तांको गोटे legal protection दिया गला. Only SP level officer approval हला परे समन करा जाय परिबो. तो summoning is allowed only if there is a material evidence involvement in a crime जदि material evidence थिबो crime रे involvement सेतिरे समन करा जाय परबो after SP level approval जोटा कि बेंच रो के थिले ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई एंड के विनोद चंद्रन थिले तो प्रोटेक्ट लॉयर फ्रॉम coercion intimidation and harassment and uphold sanctity of lawyer and client relationship नेक्स्ट देखिबा Delhi bans entry of non-BSIB commercial vehicle today. तो दिल्ली गवर्नमेंट बैन करछन्ती BS4 इंजन थिबा vehicle को बैन करा जायछि आज ठारू तो जोथि कि पाखा बाकी 50,000 रु 70,000 vehicle दिल्ली को एंटर करूछि तो बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन जो सेगुडा को बैन करा छी BS4 इंजन को BSIB तो एबे इंडिया ऑलरेडी कोन BS6 इंजन ऑलरेडी चालू हेलानी इंडिया रे तो बट टारगेट थिला कोन एंट्री परमिटेड थिला अक्टोबर 31 2026 पर्यंत थिला बट एबे बैन करा जायछि तब देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन एंट्री ऑफ कमर्शियल गुड व्हीकल रजिस्टर्ड इन दिल्ली रे जो कमर्शियल गुड व्हीकल रजिस्टर होइछि तांको ऊपर कोनोसी रेस्ट्रिक्शन रहइबो नाही नो रेस्ट्रिक्शन ऑन vehicle registered in Delhi with BSVI complaint जोटा कि BS6 इंजन थिबो एवं कमर्शियल व्हीकल हेतु सेतिरे सॉरी BS4 थिबो BS4 रो जदि दिल्ली रे रजिस्टर हेतु ताकू बैन करा जाय परबो नाही ताको पय अछि केबे ना अक्टोबर 31 2026 पर्यंत अछि नेक्स्ट देखिबा तो फॉर 6 month mission at heavenly place space station youngest Chinese astronaut lift up to Chinese own space station जोडा रहउची heavenly place को अछि बा तियानगोंग को जाउची Chinese space station नेम हैला कोन तियानगोंग और heavenly palace तो सेठी एबे रिसेंटली कोन हैला सेंझौ 21 रॉकेट रे 7th मिशन लॉन्च कराई चाइनीज स्पेस रो जोडा कि लाइव रहइबो 6 month तो देखिए सुदानीज वायलेंस देखिए सुदान में कोन होची ना पैरामिलिटरी फोर्सेस एंड तांकरो मिलिटरी फोर्सेस भितरे वायलेंस चलची led by group of like RSF paramilitary violence led by group RSF has created just a massive humanitarian catastrophe जोथरे एग्जीक्यूशन होची मास डिस्प्लेसमेंट एंड सिविलियन फेसिंग एक्सट्रीम हार्डशिप तारे ऊपर आर्टिकल डा बेस अछि जोटा रे एक जोटी कोन होची ना सुदान रो मिलिटरी आ पैरामिलिटरी फोर्सेस भितरे वायलेंस चलिछि एवं कॉमन पीपल सेतरे अफेक्ट होउछन्ती नेक्स्ट आर्टिकल देखिया Chinese president protect free trade agreement and APEC
as Trump skip key regional summit. तो APEC summit एबे चली जोटा कि साउथ कोरिया रे चलची साउथ कोरिया रे वर्तमान APEC समिट जोटा कोन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस चलची इकोनॉमिक कोऑपरेशन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जोटा रहची कोन चाइनीज प्रेसिडेंट भाउस टू डिफेंड फ्री ट्रेड एंड मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करिया पे चाइनीज प्रेसिडेंट କହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ in contrast see presence US President Donald Trump absent signaling shift in dynamics and global trade leadership तो ଏବେ देखा जाଉଛି କଣ ନା shift in global trade leadership from US to China तो recently US President visit करथिले because of only US China summit but से skip करଛନ୍ତି APEC ର summit को skip करଛନ୍ତି after meet Chinese President ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଅର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଶିଫ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି ବିକଜ କ'ଣ ୟୁଏସ୍ କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରୁଛି ଚାଇନା ଚାଇନିଜ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିଆଫର୍ମ ଚାଇନିଜ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିସନ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନିଜିମ କୁ ଅପୋଜ କରୁଛି ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିଲାଟରାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କୁ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଡିଫେଣ୍ଡର ଅଫ ଓପନ ମାର୍କେଟ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ ଅଫ ରାଇଜିଂ ଟ୍ରେଡ ଟେନସନ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कौन चाइना और कनाडा भितर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है तो बहुत समय धरी विवाद चलता ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो बट सेटा एबे रीसेट हेची आफ्टर मार्क कार्ने बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा देन डिस्कशन अंडरस्कोर चाइनीज आउटरीच टू स्ट्रेंथन बायलैटरल एंड रीजनल कोऑपरेशन होला यूएस एब्सेंस कोनला ट्रम्प स्किप द समिट एंड लिविंग स्पेस फॉर चाइना तो गोटे लीडरशिप प्लेस जेतला भॉइड होची चाइना सेठी एंट्री कला and sidewise the poverty pointer globalization has contributed to poverty reduction globalization द्वारा poverty reduction हेची एवं reverse these gains when rising protection could reverse जदि protectionism rise हेबो trade barrier आसीबो तो poverty मध्य rise करिवो power shift in global trade leadership देखा जायछि चाइना positioning itself as champion of free trade contrast to USA रो एबे protectionist policy जोडा रहउछि मागा make America great again जोटा कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी तो चाइना प्रेसिडेंट ताकू काउंटर करछंती एवं चाइनीज को चाइना हाउस टू सपोर्ट फ्री ट्रेड पॉलिसी एवं अंडरस्कोर जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ट्रेड एंड वार्स मल्टीलैटरल कोऑपरेशन देन नेक्स्ट आर्टिकल देखिबा यूएसए रशिया टू पार्टिसिपेट मेगा इंडियन नेवी ड्रिल इन फेब्रुअरी तो इंडिया रे गोटे मिलियन एक्सरसाइज करा जाय जोटा कि बायनियल एक्सरसाइज करते तो विभिन्न कंट्री रो नावी पार्टिसिपेट करंती जोटा कि मिलन को जाउ सेठी यूएसए एंड रशिया बोथ पार्टिसिपेट करबे ओवर 50 अदर कंट्री मध्ये पार्टिसिपेट करबे जोटा कि आरबीएनसी रे होची देन देखिए नेक्स्ट आर्टिकल हेल्थ हैजार्ड एचसी हाई कोर्ट सेज कैन नॉट अलाउ ओआरएस लेबल्ड बेवरेज इन मार्केट तो एबे कोन करोची न ओआरएस हला ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ताकू कोन कराउची ना किसी कंपनी माने कोन करछनी ओरल सॉल्यूशन हिसाब रे कहि कि ताकू मार्केटिंग करा जाउची तो सेति पय कोन हला ना एफएसएसआई बैन करची ओरल सॉल्यूशन को तो दिल्ली हाई कोर्ट upheld एफएसएसआई बैन on beverage marketed as ORS oral rehydration solution citing public health concern and this product is misled the consumer even believing they were therapeutic but they are not कोर्ट डिसीजन जस्टिस सचिन दत्ता रिजेक्ट डीआरएल डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी एटा गोटे प्ली साइन करथिले प्ली एफएसआई पब्लिक हेल्थ ओवरराइड्स कमर्शियल इंटरेस्ट तो से माने कहले जे ऑलरेडी प्रोडक्शन हे जाईची तो एको मार्केटिंग में अलाउ करा जाय तो किंतु कोर्ट ए ग्राउंड रे डिसमिस कले प्ली बिकॉज ऑफ पब्लिक हेल्थ ओवरराइड कमर्शियल इंटरेस्ट तो सेति पई अपहेल्ड रहिला एफएसएसआई रो डिसीजन जेटा कि बैन कराइची The multilateralism after United Nations. The article by Ram Madhav. So the article highlighting structural flaw that reform cannot fix. United Nations. United Nations 80th anniversary is United Nations came into force kebe October 24, 1945. And the idea of former US President Franklin D. Roosevelt. आइडिया थिला तो यूनाइटेड नेशन फॉर्म थिला अक्टोबर 24 1945 इन तो जदि देखिबा कोन आर्टिकल कहछि कोन मल्टीलाटरलिज्म आफ्टर यूएन तो यूएन जदि देखा जिवो एबे देखा जिवो
तो करेंट जदि देखा जो स्ट्रक्चरल फ्लॉ दैट रिफॉर्म कैन नॉट फिक्स यूनाइटेड नेशन रे डिफरेंट टाइप रो स्ट्रक्चरल फ्लॉ रहउची जेपरी कोन रहउची ना तो यूएन क्रिएट कराइला केबे आफ्टर वर्ल्ड वार 2 जोटा कि मेन एम थिला कोन प्रिवेंट फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट एंड promote cooperation between country and prevent future conflict, that is another world war. After world war 2 रे एटा करा जायतिला and prevent future conflict and promote cooperation and structure especially एटा P5 रोची UNSC रो मेंबर जो रोचंती UNSC P5 कंट्री रहले परमानेंट 5 मेंबर जो माने रहले रिफ्लेक्ट द पावर बैलेंस ऑफ 1945 तो से टाइम रे ए माने पावरफुल थिले बट 21st सेंचुरी रे जे देखा जिवो तो सेटा द सिनेरियो इज चेंजिंग चेंजिंग सिनेरियो रे तो यूएन रो रिफॉर्म निहाती दरकार तो वीटो पावर जोटा रहला P5 मेक यूएन इनइफेक्टिव वीटो पावर जोटा रहला परमानेंट 5 मेंबर जो मान रहले से मान वीटो पावर होची जोटा कि एड्रेसिंग मेजर क्राइसिस रहला जेपरि रशिया यूक्रेन वार रोकिबारे फेल मारिला P5 वीटो पावर जोगु यूएस वीटो कला तो जोटा कि पैलेस्टाइन को एज ए कंट्री हिसाब रे रिकॉग्नाइज करिहला नाही तर यूएन ऑफन फेल टू एक्ट डिसिसिवली बिकॉज़ ऑफ जियोपॉलिटिकल रिवाइलरी बिटवीन यूएस रशिया एंड यूएस चाइना. A call for reform like expanding Security Council even be debated for decades but remains stalled. तो जेमिति करा जाउची कोन कोआ जाउची ना जर्मनी इंडिया ब्राजिल एवं जापान बिग जे कंट्री को आउची एमाने दाबी करछन जे एमानकु परमानेंट मेंबरशिप हिसाब रे एक्सेप्ट करा जाउ बट सेटा ओनली डिबेट स्टेज रे रहिछि ए पर्यंत एक्चुअली फॉर्मेशन किछि हेई नाही यूएन रो एक्सपांड हेई नाही तो करंट रिलेवेंस देखिबा आउटडेटेड एंड पैरालाइज्ड and unable to manage global challenges like conflict, pandemic, and climate change. Conflict एबे different country रो conflict चलिछि यूक्रेन वार रहिला ता सहित ईरान इजराइल पैलेस्टाइन एवं डिफरेंट कंट्री रे गृह युद्ध मध्ये चलती जोडे कि रोकिबारे कंप्लीटली फेल तल पैंडेमिक कोविड टाइम रे ग्लोबल लीडरशिप कोनसी देखियो मिलला नै तो डिफरेंट पैरालाइज पॉलिसी मध्ये रहउची अल्टरनेटिव इमर्जिंग अदर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रिक्स एससीओ आर गेनिंग ट्रैक्शन एंड मोर इक्विटेबल प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन तो ब्रिक्स एंड संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अदर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन मध्ये मोर इक्विटेबल प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन एंड दिस रिफ्लेक्ट शिफ्ट इन मल्टीपोलैरिटी एंड रीजनलिज्म in global governance. The UN as an organization is completely outdated and paralyzed. That's the article talks about. The article also suggests the era of UN-centric multilateralism is fading and plural, flexible and inclusive multilateral arrangement may be necessary to address. तो जब करा जीवो कोन ना UNSC को एक्सपांड करा जीवा दरकार यूएनएस रे जदि देखिबा तो हमर अफ्रीका रे कोनोसी मेंबर नाहंती अफ्रीकन कॉन्टिनेंट रे नो मेंबर यूरोप रे जदि देखिबा यूके फ्रांस दीटा कंट्री रहउचंती एशिया रे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बट वन मेंबर ओनली चाइना अफ्रीका रे नो मेंबर एंड ऑस्ट्रेलिया ओसनिया सेट मध्ये मेंबर नाहंती और इंडिया होची लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बट इंडिया रो मेंबरशिप नाही इंडिया को एक्सेप्ट करा जाउ नाही पर्यंत तो सेथि पई को जेछि यूएन एज ए ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटली पैरालाइज्ड एंड फेडिंग द नेक्स्ट आर्टिकल देखिबा एंटी क्लाइमेट होक्स तो recently Donald Trump outright climate denial with Bill Gates' reasonable but complacent approach. So Mehta argue that while Trump denial is dangerous
and Gates' optimism about technological fixes may even more ridiculous because downplay urgency and normalizes delay. तो एठी कोन कहउची ना बिल गेट्स कोन करचनी ना डाउनप्ले करिया चेष्टा करचंती एंड ट्रम्प सेटु एग्जांपल नै कहचनी नथिंग देयर इज नथिंग कॉल्ड क्लाइमेट चेंज. तो ट्रम्प स्टांस रहिला कोन रिजेक्ट करचनी क्लाइमेट साइंस अबाउट आउटराइट एंड रिप्रेजेंटेटिव क्लियर विजिबल थ्रेट टू ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन. बिल गेट्स को स्टांस कोन रहउची ना एक्सेप्ट क्लाइमेट चेंज. से रिकॉग्नाइज करचनी क्लाइमेट चेंज इज समथिंग बट एम्फसाइज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन like carbon capture, nuclear energy and geoengineering, they are the main solution. तो बिल गेट्स कोन करचंती ना क्लाइमेट चेंज रो थ्रेट को ताको कोन करचंती ना डाउनप्ले करचंती एवं से एडवोकेट करचंती टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन द्वारा हमें क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करि पारे लाइक कार्बन कैप्चर दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, न्यूक्लियर एनर्जी एवं जियो इंजीनियरिंग करके हमें क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करि पारिबा बा रिड्यूस तार इंपैक्ट को कमै पारिबा. Frame climate action as a matter of trade-off rather than immediate systemic change. এবং risk creating compliancy by suggesting that technology alone will save. Se advocate করছেন only technology can save us from climate change, risk of climate change. The critic of Gates approach है कोन urgency of present action. तो ओवर रिलायंस ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी जदि टेक्नोलॉजी को आमे ओवर रिलायंस करबा तो इग्नोर करूची जोटा कोन प्रेजेंट एक्शन को इग्नोर करिवो एवं ट्रीट क्लाइमेट चेंज एज ए टेक्निकल प्रॉब्लम rather than political and ethical social challenge. And complements risk will get emphasis on trade-off that is like vaccine funding versus climate action distract from addressing urgent and irreversible climate threat. Distract କରୁଛନ୍ତି the fact that incremental progress is enough and disaster are not imminent. Disaster imminent no but incrementally progress करिबा सेटा होची enough बोली से advocate करूଛନ୍ତି. The systemic failure climate change intersect with the existing global failure which is poverty, health, inequality that cannot be tackled by technological innovation. Technological innovation द्वारा poverty and health inequality के हमें tackle कर पाएगा नहीं. Growth and technology will fix everything leads to delay and insufficient action. So technology is not a solution of every problem. नीड फॉर होलिस्टिक एक्शन गोटे होलिस्टिक अप्रोच करा दरकार जो कि आर्टिकल ले कोन कहचंती प्रताप भानु मेहता कहचंती दैट इज ए कंबाइन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स विथ सिस्टमैटिक रिफॉर्म करा जिवो इन कोन टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो ता सहित गोटे सिस्टमैटिक रिफॉर्म मध्य करा जाऊ इंस्टीट्यूशनल चेंज करा जिवो एंड पॉलिटिकल विल शो करिया. तो ट्रम्प जदी देखिबा से क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट रो हरि जाउचंती एंड क्लाइमेट चेंज को कहचंती एज ए होक्स नथिंग इज क्लाइमेट चेंज. पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट रो से ऑलरेडी ओहरी जाइतले फर्स्ट टर्म एज प्रेसिडेंट. And broader implicit denialism of Trump and accomplishment of techno optimism of both undermine meaningful climate action को undermine करूची. Both are powerful figure. तो सेमान जदि गोटे नेगेटिव अप्रोच रहिबो तो सेटा अंडरमाइन करबो द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट देखिबा इंडिया एंड सुपर पावर. So highlighting a return of bipolarity, mainly the rivalry between US and China. Recently, US President कहते कौन US China को G2 हिसाब से recognize करते. The US China relations defined by competition for technological, military, and economic dominance. Their strategic bargain do not include broader international cooperation in effectively sidelining other world power. तो historically हमें देखिबा तो रशिया historical जो देखिबा USSR and USA bipolar world थिला ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा रे थिला. देन आफ्टर फॉल के बेला 1989 जोटा कि यूनिपोलर हे गेला. 1991 रे फॉल ऑफ यूएसएसआर जोटा रे कोन हला ना यूएस रो डोमिनेंस रहिला एंड वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर. नाउ ए न्यू बाइपोलरिटी as China is emerging as a new superpower and USA is already there. And US China timing recent summit between Biden and recent summit between Trump and Xi Jinping signal attempt to managing competition rather than outright confrontation को avoid करे कि competition ऊपर focus करिवो. Managing competition rather than outright confrontation. Both are vying for control over supply chain, technology and strategic influence रहिबो.
इंडिया ऊपर जदि इम्प्लिकेशन कौन देखिबा ना इंडिया कैन नॉट रिलाई सोली ऑन एक्सटर्नल बैलेंसिंग और अलायंस टू अवॉइड मार्जिनल इंडिया मस्ट इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक दैट इज सेल्फ रिलायंस पर फोकस करा जिबा दरकार टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन रेजिलियंस एजुकेशन स्किल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऊपर इंडिया फोकस करा जिबा दरकार एंड डिप्लोमेटिक एजिलिटी मस्ट बी मैच्ड इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस मध्य होबा दरकार ब्रॉडर मेसेज देखिबा तो इंडिया ग्लोबल रोल विल नॉट बी सिक्योर्ड बाय डिप्लोमेसी एलोन तो विदाउट डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग जदि इंडिया शुड बिकम ए मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर तो मेक इन इंडिया जो रही तार एम इंडिया कौन मेक इन इंडिया एंड मेड फॉर वर्ल्ड इंडिया शुड बिकम ए डोमेस्टिक विदाउट डोमेस्टिक कैपेबिलिटी building India risk being overshadowed in world dominated by US China strategic bargain. The article calls for long term vision and internal transformation. तो इंडिया रो से प्रकार लेवरेज रहा दरकार जेमिति चाइना वर्तमान रेयर अर्थ मिनरल को कंट्रोल करूची तो चाइना पाखरे गोटे स्ट्रेटेजिक लेवरेज रोची जोटा कि इंडिया पाखरे नाही तो इंडिया शुड बिकम ए मैन्युफैक्चरर rather importer of goods तो इंडिया गोटे मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस होबा दरकार जदि आमे यूएस चाइना अलायंस को काउंटर करि परिबा एंड इंडिया रिस्क बीइंग ओवरशैडोड बाय इन वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक बार्गेन इंडिया पाखरे बार्गेनिंग पावर रहबा दरकार सो थैंक यू काले आमे नवेंबर 2 रो डिस्कस करिबा सो पीडीएफ पे जॉइन करंतु टेलीग्राम चैनल चेरिश टू लर्न थैंक यू